Hello students, in the last video lecture we talked about some notations which will be used throughout the course. So today we will start very first definition, partial differential equation. As you know all, a partial differential equation is an equation involving the unknown function of two or more variables, okay, and certain of its derivative. हमारे पास ordinary differential equation में क्या होता था, function of one variable we were talking about and we were taking the derivatives of that dependent variable with respect to independent. But here there is an unknown function of two or more variables and its derivatives. So that equation is known as actually the PDE. Now the definition of standard Kth order PDE. So what is the Kth order PDE? If we fix some integer k greater than equal to 1 and let u is some open subset of Rn, then an expression of the form f of dku, dk minus 1 u and so on, d of u, u and x is equal to 0. This expression where x belongs to u, where u is subset of Rn, is called the Kth order partial differential equation. Okay, where this f is a function from r raised to power n raised to power k into r raised to power n raised to power k minus 1 and so on, r raised to power n into r into u to r. This is given actually. That means the partial differential equation is given of order k, where k is greater than equal to 1, and you have to find out the value of the unknown. And what is the unknown? Unknown is small u, which is a function from capital U to r. Okay, this is your Kth order PDE. Right. Now we will move to the classification of the PDE. We classify the PDE into two parts. You know that your partial differential equation will be either linear or non-linear, and non-linear partial differential equation is further divided into quasi-linear PDE, semi-linear PDE and fully non-linear PDE. Okay, so what are these? So let us discuss one by one. First of all is linear partial differential equation. Okay, so the partial differential equation of this form f of dku, dk minus 1 u, du, u, x is equal to 0 is called linear if it is of the form summation alpha a alpha x d power alpha u is equal to f of x, where mod of alpha is less than equal to k. Okay, for some given function a alpha x and fx. Okay, so this type of the equation is known as the linear. So what does it mean? That means if the dependent variable and all of its partial derivatives occur only linearly, okay, with its coefficients depending only on the independent variable. Okay, so that means you can say that here that is the partial order derivatives. Okay, and there are the coefficients. These coefficients depends only on the independent variables. Okay, not on the dependent variables. So and all these partial order derivatives are linear. That means that should be of order 1. Okay, so this type of the partial differential equation is known as the linear partial differential equation. If it is not linear, then it will be non-linear. Okay, and non-linear is further divided into quasi-linear, semi-linear and fully non-linear, which we will discuss further. Okay, now let us take some examples for the linear PDE. So we say axy into ux plus bxy into uy plus cxy into u is equal to f of xy. Okay, so that is the first order derivatives. First order derivatives. Okay, that means the derivatives of the dependent variable u, and this is the dependent variable. So all these derivatives and this dependent variable are present linearly in the equation. Okay, in sabhi ki power 1 hai, you can see here, and their coefficients will be a function of
independent variable, either constant or function of independent variables, right? Ux coefficient you can see here, it is a of xy, and uy coefficient is function of xy, where x and y both are the independent. Coefficient of u is c of xy and is equal to some function of xy. Okay, if you take another example, 2uxx plus uxt plus 3utt plus 4ux plus cos 2t is equal to 0. Here u as a function of xt, right? So u is a function of xt, so there is a partial derivatives of order 2. Okay, this is of order 2 and this is of order 1. So all the partial order derivatives are linear here, having power 1. Okay, and their coefficients are constant here, right? So this will be your linear PDE. In the third one also you can see here, it is 2uxx minus 3ut plus 4ux equal to 0. So all the partial derivatives are present here which are linear, and all the coefficients of these derivatives are constant here, so it will be a linear PDE, right? Now if the given PDE is not linear, that will be non-linear, and non-linear is further divided into 3 parts you can say. Okay, so quasi-linear PDE. So you say that a PDE of this type f of dku, dk minus 1 u, d2 u, du, ux is equal to 0 is called quasi-linear if it is of the form summation a alpha of dk minus 1 u dot 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 up to du u x into d alpha u plus a naught of dk minus 1 u dot dot du u x equal to 0, where mod alpha is equal to k, right? So what does it mean? That means ऐसे नॉन लीनियर पीडीई को मैं क्वासी लीनियर कहूँगा, या फिर यू से दैट एक पीडीई को मैं क्वासी लीनियर तब कहूँगा जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है. ओके, दैट शुड बी लीनियर. Highest order partial derivative, that should be linear, and their coefficients can be a function of one order less than this one. Okay, जो इसका ये कोफिशिएंट है ये आपका फंक्शन हो सकता है इससे कम ऑर्डर के डेरिवेटिव्स का. ओके, एंड प्लस सम ऑल द टर्म्स हैविंग ऑर्डर लेस देन दिस डी अल्फा यू, दैट इज नोन एज द quasi-linear PDE. In the another word, I have written the statement over here. You can see a PDE is called quasi-linear if all the terms with highest order partial derivative of the dependent variable occur linearly. जो highest order derivative है वो केवल linear हो, and that is coefficients of such terms means highest order derivative के जो coefficient है that is a function of only lower order derivatives of the dependent variable. Okay, और जो lower order derivative that can be present in any way. Okay, now please look at the example, that idea will be clear from here. What are these? A partial differential equation of the form of this one. Here is ux, uy and their coefficient मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसका कोफिशिएंट है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो नहीं होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं. सो दैट कोफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई, देयर कोफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड यू. ओके, सो दिस टाइप ऑफ द PDE इज नोन एज द क्वासी-लिनियर. ओके, इफ आई से इन अदर वर्ड, मान लीजिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मैं जेड से डिनोट कर रहा हूँ, एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट वन, एंड कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स आई से आई विल डिनोट इट बाई स्मॉल p and कर्ल जेड बाई कर्ल वाई डिनोटेड बाई स्मॉल q. So we can write it the quasi-linear PDE as capital P of x y z into small p, capital Q of x y z into small q is equal to r of x y z. Okay, these are the coefficient of p and q actually. Okay, या p क्या है कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स और q क्या है कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, राइट. तो यहाँ पे z का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इनके जो कोफिशिएंट्स है उसमें z आ सकता है, लेकिन z के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं आएगी, फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं आएगी. ओके, सो दैट विल बी योर क्वासी-लिनियर. सो यू कैन लुक एट द एग्जांपल हियर,
एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू दिस जेड क्यूब एक्स प्लस वाई स्क्वायर. Okay, so the next one is xzp plus z square y into q is equal to x plus y z square plus x square plus y square. Okay, so what you have to look at, you have to look at only the highest order derivative. देखिए बस highest order derivative यहाँ पर क्या है, p and q है. उसके जो कोफिशिएंट है उसमें बस डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. तो इसके जो कोफिशिएंट है देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है हमारा, केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर. ओके, अगर ये टू ऑर्डर के डेरिवेटिव होते तो यहाँ के कोफिशिएंट्स में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो सकते थे, राइट, इनटू द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर होते, एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर एज इट इज, राइट. In the third one example, you can also see here p coefficient is x square z cube and q coefficient is x y z is equal to x square y z 4 plus x cube plus y cube. Oh sorry, x cube into y cube, right. This is the quasi-linear PDE. Again in the third one, यहाँ पर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल u से शो किया है. सो ux एंड uy फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ पर. इनके कोफिशिएंट में u आ सकता है. ओके, 2yu coefficient of ux and x square u square coefficient of uy is equal to u square xy. ओके, सो बाकी टर्म्स में मेरे पास u चाहे पावर में हो या ना हो, इट डजंट मैटर, बट जो आपके हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है दैट शुड बी लीनियर एंड देयर कोफिशिएंट कैन हैव द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द derivatives of this dependent variable less than of this highest order. Okay, that will be your quasi-linear PDE. I hope you understand. Now we move to the semi-linear PDE. So semi-linear PDE ही क्या है, जस्ट इसी का पार्ट है. quasi-linear PDE ही कोई मैं semi-linear PDE कह सकता हूँ जहाँ पर केवल जो आपकी कोफिशिएंट है इसमें केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए. जो भी आपके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के जो कोफिशिएंट्स है दैट कैन बी ए फंक्शन ऑफ ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी लीनियर पीडीई बोलते हैं. ओके, नाउ फर्दर यू लुक एट, सो यू कैन से दैट द सेमी लीनियर पीडीई इज अ particular form of a quasi-linear PDE, right? So here you look at the PDE of the form f of means dku dk minus 1u du ux equal to 0 is called the semi-linear if it has of the form of this one d alpha u highest order derivative, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट्स है that should be only a function of only independent variable. Okay, and rest of the terms can be anything. यहाँ पर आपके लेस देन ऑर्डर के डेरिवेटिव किसी भी वे में प्रेजेंट हो, इट डजंट मैटर. ओके, सो दिस इज द सेमी-लिनियर पीडीई. सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर अगर मेरा यहाँ पर डी के माइनस 1u होता मान लीजिए इसके कोफिशिएंट में, तो वो क्या होता, क्वासी-लिनियर होता. लेकिन यहाँ पर जो आपका कोफिशिएंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, केवल ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. ओके, उसका फंक्शन है केवल. सो यू विल से दैट दिस इज नॉट अ क्वासी-लिनियर, दिस विल बी अ सेमी-लिनियर पीडीई. ओके, इसे क्वासी-लिनियर भी कॉल कर सकते हो, इसे नॉन लिनियर भी कॉल कर सकते हो, राइट. सो दैट विल बी योर semi-linear PDE. So you can read it over here. In particular, this means that the quasi-linear PDE are called the semi-linear PDE in which the coefficient of the term involving the highest order derivative of dependent variable depends only on the independent variable alone. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के जो भी कोफिशिएंट है वो केवल फंक्शन हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के. Okay, then it will be a semi-linear PDE. Now look at the examples for this. You can look at here axy ux bxy uy is equal to f of xy u. Okay, this is xy u, ये कॉमा है यहाँ पर, right, and this is equal sign, right. So you say that you can see what is the first highest order derivative, ux and uy are the highest order derivative. तो इनके जो कोफिशिएंट है that can be a function of only of independent variable. यहाँ पर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट. सो ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इनका कोफिशिएंट केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है.
और बाकी राइट हैंड साइड में कुछ भी हो, मीन्स अदर टर्म्स कुछ भी हो आपकी. सो दिस पीडी इज नोन एज द सेमी लीनियर पीडी, राइट. इफ यू रीराइट दिस कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका z है, इंडिपेंडेंट एक्स वाई से डिनोट कर रहा हूँ, एंड कल जेड वाई कल एक्स इज डिनोटेड बाय p, कल जेड वाई कल वाई डिनोटेड बाय स्मॉल q. तो दिस semi linear pde can also be written as function of xy into small p plus function of xy into small q is equal to r of xyz, right. So this will be known as the semi linear pde. इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम इस तरीके से लिखें, राइट, वाई पी माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स. देखिए यहाँ पर p का कोफिशिएंट क्या है, ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, q का कोफिशिएंट ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. रेस्ट ऑफ द टर्म्स कैन बी एनीथिंग, right. So this will be semi-linear pde. Over here also you can see xp plus yq minus x plus yz square is equal to xk plus y square. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ. क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है ही नहीं. यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या है, कल जेड वाई कल एक्स, और ये कल जेड वाई कल वाई है. इसे मैंने लेफ्ट साइड में रखा, बाकी को राइट साइड में ट्रांसफर किया. सो इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म सपोज. तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इनके कोफिशिएंट मेरे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Okay, so this will be your semi-linear PDE. Here also you can see p का कोफिशिएंट क्या है, 1 है. यहाँ पर q का कोफिशिएंट क्या है, x plus y है. These are the function of independent variables or constant. Okay, so this is also a semi-linear PDE, right. Now this is the semi-linear PDE, or you can say that this will also be a quasi-linear PDE and this will also be a non-linear PDE. Now if we talk about fully non-linear PDE, जिसे हम एग्जैक्टली फुली नॉन लीनियर पीडी ही कहेंगे, ना क्वासी लीनियर कह सकते, ना सेमी लीनियर कह सकते. व्हाट विल बी दैट? सो द पीडी ऑफ दिस इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 इज कॉल्ड फुली नॉन लीनियर इफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर नॉन लीनियरली इन द इक्वेशन. दैट मीन्स जो भी आपके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उनकी डिग्री अगर 1 नहीं है, सो दैट पीडी इज नोन एज द non-linear PDE, fully non-linear PDE you can say. Okay, so you can see the example here, ux square plus uy square is equal to 1. यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आपकी 1 नहीं है. सो देयरफॉर दिस इज द फुली नॉन लीनियर PDE. Okay, so I hope you understand the definitions, the classification of the PDE. Linear and non-linear is further divided into quasi-linear, semi-linear and fully non-linear, right. Now throughout the chapter or throughout the course we denote these notations. For x belongs to u, u is subset of Rn which is open and t is greater than equal to 0. So जहाँ पर हम du लिख रहे हैं, so du will be actually written as dxu, okay, which is known as the vector of u x1. मीन्स इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 1, उसको हमने एक वेक्टर की फॉर्म में लिखा है. सो दिस इज ux1 ux2 ux3 ux n. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, एंड दिस इज नोन एज द ग्रेडियंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x. अब जहाँ पर हम t डिनोट करें, दैट t डिनोट द टाइम. ओके, लेट अस से टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द लीनियर PDE. इफ वी से फर्स्ट वन इज द लाप्लास इक्वेशन. Laplace equation, you know that delta of u is equal to 0. What does it mean? It means that summation I equal to 1 to n u xi equal to 0. What does it mean? That means partial order derivative of order 2 with respect to x1, with respect to x2, with respect to xn and their summation, right. That means it is cul square u over cul x1 square plus cul square u over cul x2 square and so on plus cul square u over cul xn square is equal to 0. So this is the second order PDE. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी जो डेरिवेटिव है इनकी डिग्री क्या है, 1 है. सो दिस इज योर लीनियर PDE एक्चुअली, राइट. द नेक्स्ट वन इज लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन. सो व्हाट इट विल बी, द लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन विल बी ut प्लस समेशन I equal to 1 to n bi into uxi equal to 0. Okay, if you rewrite it, that will be ut plus, if I open the summation, b1 ux1 plus b2 ux2 plus and so on bn ux(n) equal to 0. It can be further rated as ut plus, that vector can be written as b1 b2 b3 bn into, okay, right, into ux1 vector ux1 ux2 ux(n) equal to 0. So this vector I write as a b dot
दिस वेक्टर इज नोन एज द du या dxu or du, हम जो अभी हमने ऊपर डिनोट किया. ओके, so that will be ut plus b into du equal to 0, where b is some vector, fixed vector in Rn. Okay, so this is the linear transport equation. अगर हम linear transport equation को कंसिडर करके इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हाउ इट विल बी राइट इट एज. सो यू कैन सी हियर द मोस्ट सिंपलेस्ट PDE is the transport equation with the constant coefficient, and we know that the transport equation is ut plus b into du equal to 0 in Rn cross 0 to infinity. Okay, यहाँ पर ये b क्या है? b belongs to Rn, some fixed vector. Okay, none, and u is the unknown function, but u is a function from Rn cross 0 to infinity to R. Okay, 0 to infinity to R is the unknown function, right? And we say u as a function of, if you take x belongs to Rn and t belongs to 0 to infinity, so u is a function of xt, where x belongs to Rn and t belongs to 0 to infinity, right? And du means, you know that du means dxu, and this is the gradient vector ux1 ux2 uxn, right? So if you say the solution can be written like this, let u is the solution of the PDE. This, if u is the solution of this one, so that means you will satisfy this one, ut plus b into du equal to 0. That means uxt is the solution. We suppose it, right? U means uxt is the solution of this one. Ut plus b du equal to 0, and this can also be written as ut plus b can be written b1 by 3 bn, and it will be du is the gradient vector ux1 ux2 uxn is equal to 0. If you take its product, it can be written as b1 ux1 plus b2 ux2 bn uxn, right? And ut can be written as 1 into ut. Okay, if you collect all these terms, so that means this becomes a product of b1 b2 b3 bn comma this one, and the b1 के साथ कौन सा वेक्टर मल्टीप्लाई है ux1. So I write down b1 के corresponding ux1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट कंपोनेंट, एंड b2 के साथ सेकंड कंपोनेंट इज ux2, इसी तरीके से bn के साथ uxn, राइट? एंड 1 के साथ ut. So I write down this ut is equal to 0. Okay, so if I say this is your b1 to bn क्या है b, so that means this is a vector b comma 1, right? And this is ux1 ux2 uxn into comma ut. अगर यहाँ से लेके यहाँ तक होता दिस इज du, लेकिन ये है तो इसे मान लीजिए नेम दे देते d dash u सपोज. ओके, सो यू से दैट d dash u x इज नथिंग बट दिस वन, दिस होल ब्रैकेट, राइट? सो हमने इसी को यहाँ पर यूज किया है नोटेशन. वी आर राइटिंग दिस, राइट? दिस वन. So this is not d1, this is d dash actually. Okay, so b1 dot d dash u equal to 0. Alright, so you will say that what is this one? This is the directional derivative of u in the direction of b1, right? This is the directional derivative, right? So we are writing the same thing, directional derivative of u in the direction b1, which is 0, that means minus s. Now we exploit this insight by fixing an point xt belongs to Rn क्रॉस 0 to infinity. ओके, सो इसके जो अंदर का आइडिया है वो हम दिखाने के लिए हम कुछ डिफाइन करते हैं. सो व्हाट वी डिफाइन इट हियर, सो लेट अस डिफाइन अ फंक्शन z फ्रॉम r to r by z of s is equal to u x plus sb and t plus s where s belongs to r. ओके, हमने x और t फिक्स पॉइंट लिया है यहाँ पर. ओके, सो दैट मीन्स इफ यू टेक सम फिक्स पॉइंट फॉर दिस फिक्स वैल्यू एंड फॉर s belongs to r, you will get some fixed value, so that will be some real number. Okay, so then z of s is u of x plus sb and t comma s, and that can be written as, you know that this can be written as u, what is x? X is x1 x2 x3 xn, and b is also belongs to Rn, so that is b1 b2 b3 bn. So that means it will be x1 plus sb1 plus x2 plus xb2
xn plus sbn, right? It will be there, and this is t plus s is here. If we rewrite it, that will be zs will be u. अगर इसे को रीनेम कर देते, इसे x1 dash बोल देते, इसे x2 dash and so on, इसे xn dash, and that will be t dash, suppose. So it will be x1 dash is x1 plus sb1, x2 dash is x2 plus sb2, xn dash is xn plus sbn, and t dash is t plus s, right? Now we take the differentiation of this z with respect to s. So you take it, that will be z dot s, that means curl z by curl x will be equal to, this is a function of this, so that means the product rule will be applied here. The partial derivative of u with respect to x1 dash into derivative of x1 dash with respect to s, plus partial derivative of u with respect to x2 dash into derivative of x2 dash with respect to s, and so on. Partial derivative of u with respect to xn dash into derivative of xn dash with respect to s, and partial derivative of u with respect to t dash into derivative of t dash with respect to s. You know that अगर x1 dash का with respect to x derivative करोगे, what it will be? You can look at here. Sorry, you can look at here. ये आपका x1 dash है. x1 dash का derivative with respect to x, that will be v1. x2 dash का with respect to s करोगे, that will be v2. xn dash का with respect to x करोगे, s करोगे, that will be vn, right? और ये t dash का with respect to s करोगे तो आपका 1 आएगा केवल, ओके? तो हमने ये डेरिवेटिव्स यहाँ पे लिख दिए, v1 v2 v3 vn and that is 1, राइट? अगर मैं इन्हें करेक्ट करके लिखता हूँ, सो हाउ इट कैन बी रिटन एज, यू से दैट दिस कैन बी रिटन एज a vector v1 v2 v3 vn, and the partial order derivatives, u partial derivative with respect to x1 dash, u partial derivative with respect to xn dash, and so on, alright, plus u t dash. So this is nothing but vector b into, that can be written as d of u, this will be d of u, so b into du plus ut, okay? t dash है ना, t dash को हमने इस फॉर्म में लिखा है, that means u of x plus sp and t plus s, this is of ut of this one, right? So that means this ut plus b into du, but we say that u is a solution of this ut plus b du. If u is a solution of this one, so that means this will be equal to 0. If this will be equal to 0, that means z dot s will be equal to 0. If z dot s will be equal to 0, integrating both sides, we will say that z of s will be constant, okay? If z of s will be constant for any value of s, so you will say that u is the constant because z of s is equal to u, okay? If z is constant, so that means u is constant, right? Because you define over here, right? If z is constant, so that u will be constant. If u is constant, so you will say that u is constant on the line passing through xt. u is constant on the line passing through xt and with the direction b1. So you say that for each point xt, u is constant on the line passing through xt with direction b1, okay? तो मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ xt बिलोंग्स टू rn क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी, सो u हमारा क्या है, कांस्टेंट है उस लाइन पर जो xt से पास कर रही है, और डायरेक्शन उसकी क्या है, b1 पर, ओके? तो अगर इस टाइप की लाइन हमें कोई भी मिलती है, ओके, और उस लाइन पे हमें अगर किसी भी एक पॉइंट पर वैल्यू पता चल जाती है, तो हमें पूरे के पूरे प्लेन पर, पूरे के पूरे स्पेस पर उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, बिकॉज u इज कांस्टेंट ऑन सच लाइंस, okay? So that's why we written that if we know the value of u at any point on each such line, then we know its value everywhere in Rn into 0 to infinity, right? So that will be the transport equation. The next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.